Right then, we are once again back with our next team analysis, and this time it's another blue team, but it's the Afghanistan. We are talking about their team analysis. I have Aryan from the Direct Hit with me. Aryan, Afghanistan. If you have watched cricket, all the fans, we watched what they did yesterday in the similar stadium. It's in Sri Lanka itself against Pakistan. Though they lost in the last over, but they performed really well compared to the first ODI. Your take on Afghanistan in the Asia Cup coming up? अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं पहले तो हेलो टू एवरीवन, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू वेयर एवर यू आर. Performance is there, but can that performance be turned into progress? That is the question we are all looking forward to. Yesterday performance came. They were on top of that game. Somehow they found a way to lose it, and I tweeted this as well. Afghanistan find some ways to lose winnable games. I guess we will never know why. That were my exact words on X, not Twitter, but X. So yes, this is a team that has the potential, but can the P turn into P, potential into performance? That is my take, and that is what we'll give you guys today. We'll look at the team which is being played in the Afghanistan series, and then go into the minute details. Send in your questions, hit that subscribe button, and yeah, Pritam, take it over. Definitely, and that's the reason why we were talking about yesterday, day before yesterday, we were talking about Bangladesh, one of the underdogs, and similarly Afghanistan, one of the underdogs that can prove costly and they can trouble many big teams. They can trouble India because they have quality spinners. And talking about good cricketers with good mindset and stuff, we have a guest today who is very into cricket, very knowledgeable, loves cricket, and we have Rohan this time in our cricket. Welcome, Rohan, to the show. And Rohan, your take on Afghanistan, a team that has troubled many of the teams, but as Aryan said, you can hear that from performance, they are not being able to get to wins. That's the thing which they need. What do you think? Yesterday they should have won that game. They should have wrapped up the game. They should have been made history. They would have at least won the first time against Pakistan, but eventually नसीम शाह कहाँ से नसीम शाह आ गया वापस मार दिया छक्का चौका कहाँ से वो नो बॉल भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो भी नो बॉल था लेकिन कहाँ से छक्का चौका मार के क्या सेलिब्रेशन लास्ट ऐसे सेलिब्रेशन हम लोग देखे थे आईपीएल में आवेश खान का एट द चिन्नी स्वामी स्टेडियम सो पता नहीं क्या था वो एनीवेज इट वाज अ गुड विन बट अफगानिस्तान आपके हिसाब से कल बेटर परफॉर्मेंस था इंस्टेड ऑफ व्हाट दे परफॉर्मड इन द फर्स्ट ओडीआई 60 ऑल आउट हो गए थे कहां से कल 300 बनाए थे क्या लगता है व्हाट विल अफगानिस्तान प्रूव टू बी इन द एशिया कप First of all, thank you for getting me into the show with yourself, Pritam and Aryan. अफगानिस्तान नो दे आर वेरी मर्क्यूरियल मुझे लगता है देयर इज नो कंसिस्टेंसी उनके प्लेइंग में जैसे आपने बोला फर्स्ट मैच में 59 ऑल आउट था कल 300 बना दिया तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना you don't know what is going to expect tomorrow they may get 300 again or again may collapse to 80 all out so unless you get consistency in your team with respect to your batting and bowling things will be like this only because they are so near yet so far कल अगर वो लोग जीत गए especially in Pakistan the rivalry that is brewing these days I think अफगानिस्तान में शायद नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देते अगर वो जीत जाते तो so but they are always a threat man especially in Asian conditions subcontinent में उनके spinners राशिद हो मुजीब हो the guy who didn't play Noor नबी Ahmed no नूर Noor Nabi will be pretty much constant, but if the pitches are a bit on the slower side, dry hai, these guys will be lethal. Trust me, if they get even a par score on board, oh look, they'll eat you up. I don't care which opponent is there, the batting unit there at the facing end. These guys will eat you up for sure. If the pitch has even a little bit of distance. उनका weakness है क्योंकि आजकल के modern cricket में सभी pitches are very good to bat on, flat pitches. Yes. Irrespective of how much a quality spinner you are, you may not get so much assistance to what you call get through a side with 4-5 wickets. Rashid may get you Yes. one or two in between. तो skill factor क्या पे आता है उनका fast bowling attack. Yes, Fazluk Farooqi Yes. is there. The new guy Abdul Rahman. Omar Zai. All these Abdul Rahman. Yes. Abdul Rahman. All other these guys don't have the pace factor to worry anyone. And experience वो लोग हार कहाँ रहे डेथ रोहन Oh, ओवर Rohan. में एक मिनट शायद क्या
डेथ ओवर में तुमको Yeah. अच्छा फास्ट बॉलर्स हु कैन बॉल दोस कटर्स या यॉर्कर्स, यू नीड टू हैव सम पेस मैन. दीस गाइस डोंट हैव दैट Yes. पेस टू ट्रबल सेट बैट्समैन. तो उनका Huh. फास्ट बॉलिंग अगर कोई अच्छा सा मिल जाए ना, दैट विल बी अ फैक्टर दैट विल जस्ट मेक इट अ कंप्लीट यूनिट बॉलिंग अटैक में. जब तक वो फास्ट बॉलिंग Yeah, I एक कोई mean, अच्छा ऑलराउंडर में नहीं मिलते तो प्रॉब्लम ये रहेगा उनको. yeah, I agree. Or Rohan is very, he's looking into the future. मैं इससे अभी फास्ट बॉलिंग पे क्वेश्चन करने वाला था कि इनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी लाइन लग रही है, और एज ही सेड कि एक जो ब्रिज होता है इनका, जहाँ कहाँ इनकम्प्लीट हो रहा है उनका ब्रिज, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दे आर मिसिंग द पीस दैट इज अ गुड फास्ट बॉलर जो आके मैच क्लोज आउट कर सके. यू वुड थिंक वो फारूकी है, पर truth is Farooq is not able to execute. He's into the IPL because of his death bowling. From what Sunrisers saw, they picked him. और मेरा सवाल ये है कि अब रोहन, रहमत शाह, these players have been around for a while. You see Nazibullah Jadran और रहमतुल्लाह गुरबाज और अब ये इब्राहिम, that this player is there to get into contention for semi-finals, because this is ODI cricket. They can. I'm taking a big shot. मैं बहुत बड़ा shot ले रहा हूँ, but do they have the batting to put on scores consistently? I know every day will be not be a Sunday, but let's say 10 में से 7 games क्या ये decent score post कर सकते हैं? Do they have the batting resources, the batting smarts to do that? Because they know कि score आ गया board पे, bowler संभाल लेंगे, पर वो score ही नहीं board पे आता. That, what do you think about how can they resolve that? फर्स्ट थिंग, सेमीफाइनल जो आप बोल रहे हैं वो वर्ल्ड कप के हिसाब से बोल रहे हैं, एशिया कप से? Sorry. We are sticking to Asia Cup. हाँ, Going to the. Super एशिया Force. कप अगर आप देखोगे तो शेड्यूल देखो उनका उनका मैचेस कहाँ पे है. आई थिंक दे स्टार्ट Yeah. एट लाहौर गडाफी स्टेडियम. Correct. Yeah. Just a फैंटास्टिक second. बैटिंग Just पिच. a second. Yeah. There हाँ you go. There you go. हाँ, देखो हाँ. उनके दोनों Yes. मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट दोनों लाहौर में है. पाकिस्तान बैटिंग पिचेस वी नो मैन. आप, इट्स अ हाईवे. 300 पक्के हैं वहां पे. किसी भी खराब बैटिंग यूनिट भी आ जाए. सो बट ओनली प्रॉब्लम इज ड्यू आ सकता है वहां पे. तो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स को शायद ग्रिप करना मुश्किल हो सकता है. टिपिकल व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द विंटर्स. सो लाहौर में ड्यू फैक्टर रहेगा. अगर ड्यू नहीं है तब देन हाँ. दिस देयर एक्स फैक्टर बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, ये सब कुछ कमाल कर सकते हैं. बट बैटिंग वाइज, बिकॉज विथ, आई ऑलवेज फील वन थिंग, कंडीशंस आर किंग भाई. You be any legend of the game, if the Yeah. conditions are against you, you can't perform, right? So ये condition इनके so called weakness जो batting है उनको favor करेगा. We saw yesterday what this Rahmanullah Gurbaz does to hit 150 हाँ. against the bowling attack of Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf. कुछ बंदे में है ना दम. So even the other guy who mentioned, the Ibrahim Zadran, very impressive one-day stats. He has got a lot of hundreds हाँ. recently against quality attacks. So their batting is pretty good, I feel. Only thing is under pressure against good quality attacks, consistently ये लोग अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अगर आप एशिया कप के हिसाब से हाँ. देखें, बेस्ड ऑन कंडीशंस ये लोग अच्छा कर सकते हैं. बट वर्ल्ड कप के हिसाब से अगेन हाँ. उल्टा आएगा. कंडीशन थोड़े मुश्किल हो रहेंगे इनके बैटिंग के लिए. एंड द क्वालिटी ऑफ अटैक्स लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, द वीकनेसेस थोड़ा एक्सपोज होगा. शॉर्ट बॉल आएगा, बाउंसर आएगा. पेस को इतना खेलेंगे कि नहीं, जब बॉल थोड़ा हिलेगा, स्पेशली थोड़ा मॉइस्चर रहेगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट. पिचेस को बाद में भी अच्छा खेलने के लिए फ्रेश रहेंगे पिचेस. सो ऑन दोस पिचेस हाउ देयर बैट्समैन विल टॉप, डाउट है. बट विद रिस्पेक्ट टू एशिया कप, इनका बैटिंग शायद अच्छा कर ले. Yeah. ये बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग को, हम जैसे आर्यन ने कहा कि यू हैव इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान को नहीं खिला रहे, पता नहीं क्यों. हिज एक्सपीरियंस इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द मिडिल ऑर्डर्स. देन यू हैव नबी एंड द लाइक्स ऑफ. Now I'll come. He's spoken about the batsman department, and he also covered up by saying about Rahmanullah Gurbaz, जिसके पास बहुत domestic experience है. He has played the likes of Haris Rauf, Shaheen Shafridi, PSL में बहुत खेले हैं, and that's the reason why he has the talent, and he definitely should take responsibility at top, because he is somebody, if he sticks around, he can change gears and score quickly as well as he can rotate strikes as well. And coming into the all-rounders, बहुत बहुत लाजवाब ऑलराउंडर्स यहाँ पे हैं. मोहम्मद नबी, राशिद खान, उमर जाई. आई होप उमर जाई इज बैक from his injury. I'll
bring on the question as well that is coming from one of the fans, that is, don't you think Afghanistan depends ज़्यादा on Rashid Khan? सबसे ज़्यादा रशीद खान पे डिपेंड वो लोग का ट्रम्प कार्ड है, रादर यू विल से द गो टू मैन। रशीद खान अगर विकेट्स नहीं लेते तो क्या अफगानिस्तान goes to the back foot, or like we saw yesterday, Rashid Khan didn't pick wickets but Mujib did, another very talented player। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 मैच लगातार दे प्लेइंग इन लाहौर, स्पिन फ्रेंडली होगा लेकिन होपफुली थोड़ा स्लो पे रहेगा इफ दे बोल सेकंड। सो रशीद खान के ऊपर फैन का जवाब आप जरूर दे दीजिए। मेरा जवाब है कि फॉर अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी, डू यू थिंक विन द टॉस बैट फर्स्ट शुड बी द स्ट्रेटजी, क्योंकि उन लोग का बॉलिंग स्ट्रांग है। डेफिनेटली एज यू सेड स्ट्रेंथ को वो यूज करना चाहे तो विन द टॉस बैट फर्स्ट ही रहेगा। बट अगेन द ओनली क्वेश्चन मार्क विल बी द ड्यू फैक्टर। इन केस ड्यू आ जाए, इनके स्ट्रेंथ को नेगेट कर लेगा। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। हाउ इट्स लाइक, अगर आप गन हो ब्रावाडो दिखा के जो भी हो जाए, हम लोग इतना रन करेंगे, हमारा बॉलिंग ये कर देगा बोल के भी जा सकते हैं। नहीं तो सेफ खेलो कि ड्यू आ सकता है, हम भी चेस कर लेंगे बिकॉज अवर बॉलर शुड हैव kept the opponent below par, maybe you can say. So ये भी एक हाँ है, but it depends on the day. Dependency on Rashid Khan, which one of the viewers asked. Definitely, man, he's a marquee player for Afghanistan. He's the one जिसने अफगानिस्तान को एक मैप पे एक रिकग्निशन लाया है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल रहा है। आईपीएल में भी आया फर्स्ट टाइम, तो इतना इम्पैक्ट किया, विकेट्स लिया। अगेन इररेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, दैट फेलो इज अ गाय हु इज पिकिंग विकेट्स। हाँ बट आजकल ये थ्रेट फैक्टर रहता है ना राशिद खान का, तो सब लोग उसको संभाल के खेल लेते हैं ताकि इसको विकेट ना हाँ जाए भाई। इवन करेक्ट 4 रन 4.5 पर ओवर भी चले जाए, दूसरों को मार सकते हैं। इज द स्ट्रेटजी विच अपोनेंट्स हैव इन देमसेल्व्स। बट इसका काउंटर क्या कर सकते हैं? इफ दे हैव समवन लाइक नूर अहमद आल्सो, लाइक एज यू सेड मुजीब इज बॉलिंग वेल, इफ टू अदर बॉलर्स कैन स्टेप अप टू द प्लेट, द थ्रेट ऑफ राशिद विल मल्टीप्लाई। क्योंकि उनको पता नहीं चला कि दोनों एंड से अच्छे बॉलर लगा रहे हैं भाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे बॉलर स्टेप अप करे, सपोर्ट करे राशिद खान को। देन राशिद खान का रियल जो इम्पैक्ट आएगा ना, ही कैन विन यू मैचेस। एंड दिस इज जस्ट विद द बॉल। या बैटिंग में लोअर ऑर्डर आके चौका छक्का जैसा मारता है हेलीकॉप्टर सब वी नो राशिद खान कैन विन यू इवन हारे हुए मैचेस, जैसे गुजरात टाइटंस के लिए दिखाया आईपीएल में। सो राशिद खान एनी डे इज अ मैच विनर फॉर यू मैन। या और मैं हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपकी मेमोरी लेके जाना चाहूंगा। व्हाट वाज द ईयर 2016, रोहन करेक्ट मी, सनराइजर्स, व्हाट ईयर सनराइजर्स, डिड दे हाँ। विन द आईपीएल? हाँ, what was their strength? It was their bowling, right? And हम्म, they had Bhuvi, they had Sid Kaul, they had all those supporting Rashid. Rashid was not the only magician in the act, so to say. He had the हम्म, support, as Rohan is pointing out, and he became doubly dangerous. If you remember that Andre Russell dismissal, हम्म, in Absolutely, I I think was about to talk about that at Eden one Gardens। of yeah, at Eden Gardens, exactly. You had the shot leg, you had the applied the pressure because Bhuvi started off so well. अगर अरे यार सिंपल, आई थिंक इट्स अ सिंपल फॉर्मूला कि अगर मेरे रन नहीं बन रहे, टीम को रन चाहिए, तो irrespective of whoever the bowler is, even if it's the opposition's main bowler, I have to target it because my one eye is on the scorecard कि भाई I have to go. So I think that is a fair point, and I think the score looks fairly good to me. And then क्योंकि आप अगर Rohan, देखिए these are the आर्यन, six जस्ट टू players. ऐड टू योर पॉइंट, I'm sorry, Aryan, just Yeah, to add the yeah, yeah. point about that Eden Gardens event. If you not just look into his bowling, he contributed very crucial runs at the back end of the Yes, first innings as well. yes, yes, He yes. not just because of the deep point fielder made dropped the catch and made it for six, etc., etc. But it was the last ball of the spell of Rashid Khan where he got the wicket of Andre Russell. Huh. I still hear people of KKR fans, including my father as well. They were all gutted. They were all gutted. It was just one ball you had to look for Rashid Khan, and the next over you can, yeah, Andre Russell, you were the go-to man. You could have gone for it, but it was just that last ball that tempted him to score a late cut, and he got in the slips. So he's just not just dangerous with the bat, not just dangerous with the ball, but a tremendous fielder as well. So जैसे बोलते Yeah. all-round cricketer, he is a prime example. जैसे Wanindu Hmm. Hasaranga, how big Sri Lanka will miss him. Similarly, Rashid Khan. We were just a Yeah. bit concerned about Rashid Khan being fit or not fit, but he's fit. He's going to play in the Asia Cup. They say ODI series with खेल He's a three-dimensional player. In all the three departments, he's top class. You can go ahead.
Pritam, 3D players. We all know about, we all know about that. That याद मत that दिलाओ is यार. somewhere else. But Rohan six Hashmatullah Shahidi. I'll be हाँ. honest with you. मैंने इतना नहीं देखा उसको. Looks very good. Saw him in bits and pieces, so to say. Has a good record. This is with the, I think Pritam, these are the one day Asia Cup Correct. One numbers day which Asia he's Cup. having. So he's now the captain. Now Nabi, this captaincy of Afghanistan captaincy is running like musical chairs. Idhar se udhar, idhar se. So he's going into a Asia Cup, and he's had the experience of 3 games against a team that he's going to face in the Asia Cup in those conditions. So how is that helping him? And do you think he's gotten to know the team better with these 3 games that he's played? See, you can't judge so easily, but looking at that short sample size that we have, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे उसका टैक्टिक्स थोड़ा खराब था. आई मीन इवन द bowlers let down him yesterday. I mean the extras was too much है वाइड सब. सो But कहीं पे थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा उसको भी. पता नहीं कितना बोलता है नहीं बोलता है वो, बट उसका बैट जरूर बोलता है. बिग गाय, ही कैन हिट दोस बिग बिग सिक्सेस. I think he is one of the faster hundreds in T20s also, I guess. Ashmatullah Shaidi. तो वनडे that का is That is I Zazai. think That Zazai. is Zazai. Zazai, Zazai, okay, okay, okay. Zazai. That is Zazai. Okay, Yeah. but this हाँ, guy शायद इस इतना इम्प्रेशन नहीं लगा मुझे जितना भी शॉर्ट स्टेज कैप्टन है. इट्स अ टफ टास्क फॉर हिम एंड स्ट्राइट अवे अगेंस्ट द एशियन जायंट्स इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश. It'll be tough for him, but again, how he has the resources, especially bowling में इतने resources है. अगर वो सही से, because he has one of the better brains in cricket in मोहम्मद नबी there, उसका थोड़ा इनपुट्स लेते रहे या वो भी लोग उसको साथ देना, then he can do something, especially in the field. बैटिंग में तो ठीक ठाक कर लेता है, बट इस मेन जॉब विल बी टू मेक द बॉलिंग चेंजेस एट द राइट टाइम. जितना स्मार्टली यूज कर सकते हैं अपने की बॉलर्स को, मुजीब का, राशिद का, कितना ओवर्स बचा के रखेगा फॉर अ मैचअप जैसे हम लोग बोलते हैं. वो सब स्ट्रेटेजिक अच्छे तरह के करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इट्स इजी टू हैव इट ऑन पेपर एट टाइम्स, बट ऑन फील्ड डिसीजन तो कैप्टन का ही है ना. तो हाउ वेल वो हाँ, करेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी. होप फॉर द बेस्ट. दे आर गुड टीम. लेट्स सी. बिल्कुल. एंड yeah. एज यू सेड अबाउट शहीदी जैसे हम लोग इधर स्टैट्स देख रहे हैं, दैट्स अ 2018 एशिया कप दैट वाज प्लेड इन यूएई. सो मोर और लेस वो लोग का घर का ग्राउंड है, सो दे माइट नो द कंडीशंस बेटर. श्रीलंका, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान कंडीशंस, अनदर प्लेस they have played a lot, but Sri Lankan conditions will be very different to score runs because you need to settle down. जैसे बॉल स्विंग हो रहा था पहला ओडीआई पे, दोनों टीम्स, नॉट जस्ट फरूकी, even the three fast bowlers of Pakistan, we were like, what kind of a pitch is this? This will bring in the likes of Bumrah and Shami, they were licking their lips. But now you're talking about his captaincy. यहाँ पे मेरा एक सवाल है आर्यन आपके लिए कि जैसे हाँ, रोहन ने बोला कि शहीदी का कैप्टनसी इंपॉर्टेंट रहेगा टू शिफ्ट हिज और चेंज हिज बॉलर्स. सो आपको क्या लगता है, आई ब्रिंग इन द प्लेयर एज मुजीब, हाउ इंपॉर्टेंट ही इज. मुजीब Hmm. को अफगानिस्तान लव ब्रिंगिंग हिम मुजीब इन द पावर प्ले. कितना कंट्रोल करना चाहिए ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ मुजीब आफ्टर द पावर प्ले, बिकॉज दे डू नॉट हैव द बेस्ट ऑफ द पेसर्स. if Pacers Yeah, leak runs, he will be forced to bring in Mujib in the power play. So आपके हिसाब से ये I tactics think कैसे जाने चाहिए? yeah, I think it's not so much of a forced issue here. क्योंकि Mujib is their weapon in the power play. Generally, he comes on to bowl and he has the control. सबसे बड़ी बात अगर कोई भी स्पिनर पावर प्ले में डालेगा, सबसे पहली चीज देखी जाएगी कि does he have the control on the ball most of the times or not. And he keeps a very stump to stump line, very simple. And so to be, I'm a bit proud that okay, he made his IPL debut for us. And yeah, I've seen him from very minute quarters. And he was a mystery spinner then. But then, good thing is, I'm happy for him that he realized that the game has evolved. It's not that the teams will take 100 years to figure you out. Teams kind of figured him out, and now he is also very experienced. He has the same tricks, but he uses them in those proportions jitni wo use karni chahiye. And look at the way he got Babar Azam. He knew he's a bit susceptible on that front pad, and he kept at it. Didn't move away from the plan, and he eventually succeeded. सबसे बड़ा उसका strength है, ball skid करता है. And players tend to be on the back foot और वो ball खा जाते हैं. So I think
मुजीब विल प्ले द बिग रोल अगेन. हाँ, अब दैट बॉयल्स डाउन टू कि मैं उसके 10 ओवर एज अ कैप्टन कैसे यूज कर रहा हूँ, एज रोहन पॉइंटेड आउट. तो वो जो रिसोर्स का यूज है, वो कैसे होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट to answer your question. And who else is there? Mujib is there, but Rohan Noor को हमने इतना नहीं देखा यार. I feel he should be bloody in the team. What do you think? डेफिनेटली इवन जब आईपीएल में जीटी के लिए खेला, एज सुन एज उसका एंट्री हुआ वो स्क्वाड अलग ही दिखा यार. he was हाँ bowling well, he used to pick wickets. And वो जैसे हमारा कुलदीप है, लेफ्ट हैंड चाइनामैन है, इतना क्या बोलते हैं, इतना फ्रीक्वेंट कोई ऐसे टाइप के बॉलर्स को नहीं खेलते. सो ऑलवेज दिस काइंड ऑफ बॉलर्स विल पिक यू विकेट्स. यू डोंट नो, स्पेशली आजकल के बैट्समैन कोई रीड नहीं करता हाथ से, सब लोग ऑफ द पिच खेलने हाँ के लिए देखते हैं ना. एंड समवन इज हाँ बॉलिंग एट अ डिसेंट, वो स्लाइटली लेफ्ट हैंड वर्जन ऑफ राशिद खान दिखता है एक बार. He's pretty quick. He's pretty वेरी quick. क्विक, वेरी क्विक फॉर लेफ्ट आर्म चाइनामैन. आई मीन हम लोग जो कुलदीप को देखे, ब्रैड हॉक को देखे, सब लोग थोड़े स्लोअर थे. दिस गाय इज क्विक ऑफ द हाँ पिच आल्सो. सो टाइम नहीं देता है इफ यू डोंट पिक हिम फ्रॉम हिज हैंड. सो ही इज आल्सो विकेट टेकिंग बॉलर. मैं बोल रहा, अगर ये नूर, राशिद, मुजीब तीनों साथ में खेल जाए, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा इन एनी कंडीशन हाँ फॉर श्योर. ये इंडिया में, एशिया में, दिस गाइस विल बी रियल रियल थ्रेट. फॉरेन कंडीशंस में पता नहीं, ससेप्टेबल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पिन में भी. बट दिस गाइस, वन थिंग इज देयर इज एक्यूरेसी अच्छा रहता है इनका, ऑलवेज अराउंड द स्टंप्स ऑन द. जैसे आपने बाबर का डिसमिसल बोला, दे विल बी ऑलवेज स्ट्राइट. इफ यू मिस देम यू आर गॉन मैन. एलबीडब्ल्यू बोल्ट तो इनका 100% है, जैसे हमारा सर जडेजा करता है. Always at the stumps, you miss, I hit, definitely is there. So these guys are always threatening in especially white ball cricket. yeah बिल्कुल. एंड yeah. अग्रीड, क्योंकि And I think we इन covered most of the players. sorry, Adil. In Pakistan Yeah, conditions, yeah, Preetham, two go ahead. spinners would be ideal. I think क्योंकि आप एक फजल फरूकी आपका जेन्युइन पेसर है, उसके साथ अगर इफ यू प्ले रहमत शाह और somebody as a bowling all-rounder, तो आपका दो पेसर्स कवर्ड अप हो गए. You can definitely play three spinners. Your strength is spinners, and you can definitely go for that. And as we speak about the conditions, we once again going to come back to the fixtures. तीन गेम लाहौर पे, फिर कोलंबो एंडिंग द सेकेंड लेग. ग्रुप बी में है अफगानिस्तान. दे प्ले बांग्लादेश और श्रीलंका. आपके हिसाब से रोहन, ये दोनों मैच में ज्यादा चांसेस अफगानिस्तान, यू विल डेफिनेटली से अगेंस्ट बांग्लादेश, बट दे आर प्लेइंग श्रीलंका अवे फ्रॉम श्रीलंका, सो इट्स अ न्यूट्रल वेन्यू फॉर श्रीलंका एज वेल. दे आर प्लेइंग इन लाहौर. तो Hmm. आपके हिसाब से ये दोनों मैच, अफगानिस्तान वुड लव प्लेइंग एट पाकिस्तान. दे आर वेरी used to in those conditions. So do you think Afghanistan has an edge ahead of Bangladesh? कि you stick to your first point कि D day में वो लोग क्या करते, it depends. Bit of both actually, but as you said, उनका experience होने के कारण I'll give a little edge to Afghanistan. It will be a 60-40 Afghanistan to start, I feel. Against Sri Lanka, because of the injuries that are happening again, जो ऐसा था शायद थोड़ा tilt again towards Afghanistan, I feel. श्रीलंका विदाउट चमीरा, हसारंगा, क्योंकि ये लोअर लेवल की टीम से ऐसा मिस्ट्री स्पिन नहीं रीड करते. हसारंगा वाज देयर की विकेट टेकर. No other bowlers I feel will be a threat for batting unit if they are facing Sri Lanka. There's nobody there, Correct. to be honest. Tikshana ho itna sab, they are very straight man. They don't give so much variations. You can play them out. Hasaranga is the only guy who can get you a wicket even if you're a set batsman. Yeah. So that's a huge miss for Sri Lanka. That's why I'm feeling Afghanistan, as you said, two games at Lahore. They'll be used to the conditions. Little edge to Afghanistan, and also the following game it will be at Lahore versus Pakistan. अभी ये काफी हर्ट कर रहा होगा उनको यस्टरडेस मैच. एंड इवन दैट लास्ट एशिया कप में जो हारे थे शायद, वेरी क्लोज अगेन. देयर आल्सो नसीम शाह हिट दैट 6. So we know man, they are Pathans. They fight for everything. They won't give it up easily. That will be a real blockbuster match, I feel. Everybody talks India Pakistan, but Afghanistan Exactly. Pakistan is इंडिया पाकिस्तान equally के बाद, tense. इंडिया हाँ पाकिस्तान के बाद ये बहुत बड़ी गेम है. और Yes, yes. we as neutral fans, भी बोलो, we would want Afghanistan to go through, because Yes. ताकि in the Super Fours we can get to see Afghanistan Pakistan Lahore पे. There will be 50-50 stadium. It Yeah. will be filled with Afghanis, it will be filled with Pakistanis. Aryan, your question, what do you? First of all, I don't think so. Because jail Lahore में match है, then Lahore comes out. Lahore always shows up. We've seen in PSL, and I think it will be most
most Pakistanis, but hopefully, again, as you said, hope and to the viewers, this is all subject to if Afghanistan make it through two super Hmm. fours. This schedule is subjected to that. And रोहन, सबसे हमने ये सवाल किया है हर टीम के लिए कि देखो कंट्री टू कंट्री इवन इट्स एशिया it's hard on players to suddenly go from one conditions to the Yeah. other. So do you think it will impact Afghanistan? How do you see that? We've discussed India, we've discussed Bangladesh, how it is impacting them because they have two games in neutral venues straight away. Yes. But Afghanistan का फिर भी ठीक लग रहा है. How do you think? मुश्किल है फॉर द कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान जो फर्स्ट मैच मुल्तान में खेल के फिर इंडिया के लिए कोलंबो आएगा. That will be huge for them, man. 2 days का रेस्ट भी नहीं है. Afghanistan, I think they're used to playing so much. They should be happy they are getting a chance to play, man. If I am in their shoes, they'll feel like traveling हो, schedule हो, venue हो. I don't think वो लोग बिंदास है. उनको खेलना अच्छा लगता है. They'll play, man. They won't look for this kind of excuse. I feel, to be honest, they will go out there, enjoy. Even the viewers will enjoy the game for them. उतना ही खुशी खुशी खेलेंगे for sure. So for a team like Afghanistan, that factor I feel is not so much to think about, but definitely traveling here and there conditions, because Sri Lanka is a slightly hot and humid country, Pakistan slightly more better, so temperature का difference is always there. So पानी खाना वो सब भी different रहेगा. So that will be a huge factor, definitely for sure. But playing point of view, Afghanistan, they'll go out there and just enjoy, man, for sure. बिल्कुल. एंड Uh-huh. कट शॉर्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए. ये फाइनल तो बहुत ही दूर है, फिर भी आपको क्या लगता है अफगानिस्तान विल गेट क्वालिफाई फॉर द सुपर फोर्स, एंड इफ यस देन बाय एनी चांस विल दे मेक टू द फाइनल्स? फाइनेंस तो मुश्किल है, बट दे हैव गुड चांस टू गो इनटू द सुपर फोर्स फॉर श्योर. आई फील किसके I साथ. mean, in place of Bangla or Sri Lanka is a question mark. But Afghanistan, someone, as you said, as a neutral, we love to see them do well. They bring an exciting brand of cricket. जो शायद बांग्लादेश श्रीलंका में थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है. बांग्लादेश भी जी जी, थोड़ा ये है. एकदम. नॉट श्योर हाउ मच अडेप्टेबिलिटी है. एंड their captaincy was a huge issue leading into the Asia Cup now. तमीम, शाकिब, लिटन, ये सब था. So इतना अच्छा यूनिट है कि नहीं पता नहीं. बट अफगानिस्तान डेफिनेटली विल लाइक टू सी देम मूव फॉरवर्ड. विल गेट द मोर फैंस इन ऑल्सो. पता नहीं कुछ फाइट वाइट होगा कि स्टैंड्स में, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है. बट सिंस दे विल बी एट लाहौर, तो पाकिस्तानी शायद देख लेंगे उनको क्या. बट नॉट श्योर, मैन. लेट्स सी हाउ गुड. चेयर वेयर इफ तोड़ यू आर देंगे. अफगानिस्तान सपोर्टर, होप फॉर द बेस्ट. Yeah. या. अब रीसेंट फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितनी तवज्जो दी जाती है, सिंपल सवाल है. देखा जाए तो रीसेंट फॉर्म, रोहन, आई मीन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू यू अगेन. रिसेंट फॉर्म जो ये सीरीज हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हो आप? इसका पहले है, बट आप बोल सकते हो हाँ, कि ये दोनों इसके कंसिडर पहले कर का, लो. इसके हाँ, but if you want, you can definitely consider the last two games. That is the win and a loss. Rather, दोनों loss है. Sorry, दोनों loss. दोनों लॉस है. हाँ. सी अगेन दे आर अ वेरी मर्क्यूरियल साइड यार. ये इनको पास्ट हिस्ट्री सब इतना मैटर नहीं करते. थोड़ा बोलते हैं ना, सटके हुए टाइप के प्लेयर्स है सब. दिन चला तो 300 मार देंगे ये लोग. गुरबाज वगैरह दे डोंट सी. वो अपना सहवाग के टाइप के लोग है. बॉल को देखते हैं, बॉलर को नहीं देखते वो लोग. तो कोई भी आ जाए, मार करना है तो पिटाई होगी, पक्का है. एंड वील एंजॉय एज अ व्यूअर फॉर श्योर. बट कंसिस्टेंसी इज देयर फैक्टर, मैन, टू बी ऑनेस्ट. ये अगर आप अफगानिस्तान फैन हो, आपको यही क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आज कौन सा अफगानिस्तान खेलने को आया है. 300 वाला है या 60 ऑल आउट का है. तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है एज एन अफगानिस्तान टीम. बट दैट्स दैट वन फैक्टर. एंड सेकंड इज दैट फास्ट बॉलिंग प्लेयर, मैन. क्योंकि लाहौर में थोड़ा स्विंग हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर. उनको फास्ट बॉलर एक मिसिंग फैक्टर है. दैट विल बी अ ह्यूज मिस फॉर देम, डेफिनेटली, आई विल टेल यू. बट स्पिनर्स उनके जो है वो कवर अप कर सकते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच दे स्टेप अप is what will define how much forward Afghanistan can go through. But finals definitely doubtful hai. We know what is the expectancy that we want for the final as a India. So let's see. या
Pritam, yeah, you can ask if you have या anything आप regarding तो this. हम लोग तो अपना प्रेडिक्शन बता दिए आपके हिसाब से। आप अपना परसेंटेज बताइए, अफगानिस्तान का इस एशिया कप में कितना परसेंटेज आप देंगे आउट ऑफ 100 in the Asia Cup, chances of winning the Asia Cup or stuff. We have given him some 45. figure. Yeah, we have given him 45. We want to hear what you want to give them. 45% chances of winning the Asia Cup. Like Yeah. progressing to as much as they can. Yeah, compared to the other squads, other countries, you can see India and Pakistan is the highest, obviously, Hmm. but Afghanistan a bit edge over Bangladesh हम लोग के हिसाब Hmm. से। तो आपके हिसाब से क्या है? Yeah, it's pretty much same. I'll say 50% है, 5% बढ़ा दो. But Hmm. फाइनल मुश्किल है, बट आई एज सेड सुपर फोर तक उनके लिए वही बड़ा अचीवमेंट रहेगा यार. दे हैव डन वेल. आई थिंक एशिया कप ऑफ 2018, आई थिंक दे मेड अ tie versus India, right? It was a very good game Yes, in yes, Yeah, Dubai. yes. yeah, yeah. Yeah. So Ravindra Dubai, Jadeja yes. got out. yeah, Jiddu got a Eh, याद मत six-yard करा boundary at the भाई. last but one ball. It was a good game. They have that competitiveness, but only thing is, can they finish it off? वो किलर इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना एज अ टीम, अगर एक बार वो जितना चक जाए ना वो लोग, तब Hmm. और भी डेंजरस हो जाएंगे. बट करेंटली दे Yeah. डोंट हैव दैट एज. सो डाउटफुल. 50% में मैक्सिमम दे सकता हूँ, वो भी ज्यादा है. Hmm. And I think that is fair rating from everybody here on the panel. Ramonella, ये कल की playing 11 है रोहन. I think it will be on the similar lines. इक्का दुक्का changes depending on नजीब. conditions. Uh, क्या? What were you saying? No, that's what Najibullah Zadran. He's one of the fantastic finishers here. जो उनके पास है, Correct. लेफ्ट I हैंडर mean, है. yeah, He's we a we very have he's not important we even have prop he. for them. brought him in the playing 11. We have brought him in the Yes. playing 11 because we think that him being the finisher, उसका experience बहुत बहुत important है, and him being a left hander, मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंडर शॉट है ये अफगानिस्तान Hmm. साइड। मेरे Hmm. मेरे को याद नहीं है if they don't have a single left hander in the side itself. So Najibullah Zadran being a left hander is बहुत important, and he can smack you runs. वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका kind of a Hmm. player है, like ईशान किशन type, like जल्दी रन कर देंगे भाई स्पिनर्स के Hmm. खिलाफ। So this is our 11. We've got a few changes against what they played yesterday against Pakistan. Similarly, Hmm. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, we wish we could have gotten Noor Ahmed in this side as well. लेकिन Hmm. like किसकी जगह खिलाए, हम लोग दोनों सोच रहे थे कि नूर अहमद को किसकी जगह खिलाए। हम लोग लाइक 10 मिनट तो सोचेंगे कि नूर अहमद को प्लेइंग 11 पे कैसे बुलाए। इवेंचुअली वी couldn't, we stuck to the what the team was One of yesterday. one thing was कि उसकी जगह अब्दुल रहमान की जगह who performed very Even not I to was the thinking the expectation. same. Yeah, Noor Ahmed can come in, but I don't know. We don't know what the management is thinking. No, no. But if you Only bring way. in Noor Ahmed, then आपका pace attack short हो जाएगा. You will have Yes. just one pacer. That's the thing. That अगर is the ड्यू ज्यादा compromise. हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. सो दैट्स द हाँ. कंडीशंस. अगर स्पिन फ्रेंडली हो सकते, नूर अहमद डेफिनेटली विल प्ले. नहीं तो यही अब्दुल रहमान जो थोड़ा मीडियम पेस करता है, ही विल प्ले आई गेस. विकेट्स भी लेता है यार वो अब्दुल रहमान. कल शायद एक दो अच्छा विकेट्स, बड़ा विकेट्स लिया हो. चाचू की But he pressure, got चाचू. हाँ, इफ्तिकार but को, करेक्ट, चाचू को. हाँ. but pressure में तो नो बॉल भी डाल दिया था, जो नहीं दिया था, हाँ. but फिर भी वो तो मैच अकेले ही। अब किसको ब्लेम दे, नंबर 10 नंबर क्या 11 नंबर, फजल By the फरूकी way, being so Gurbaz was not happy. Gurbaz was not a happy man. Right from that, right from that five wide, and we feel for Gurbaz. But yeah, this is the 11 we think would step on from the first game, barring a few changes. If बट the fans have, आर्यन, एक चीज yeah, मुझे, I felt really happy someone from Afghanistan had that presence of mind, was doing the run out at the non-striker end by Faruqi. oh No, no, no. It's a that's very good true. thing. That's Yeah, it's a competitive. very good thing yeah, that that he is was all in aware. his right. क्योंकि Yeah, वो लास्ट ओवर था, सबको पता था शादाब स्ट्राइक के लिए जा रहा था. एंड ही Correct. यूज्ड हिज माइंड वेरी वेल टू गेट दैट रन आउट. लोग huh, सोशल मीडिया में हजार बात कर They सकते will, हैं, they will, बट they will yeah, it's a definitely. part of the game. It's within the rules. He yes, used the rules very well. So yeah, credit to Faruqi. I hope it's a lesson Harshal learned Patel. for certain batters to stay in, man, until the ball is released. So yeah. this is good something from Afghanistan.
They're good, good, and that was well within the rights. I mean, that is Yeah. all our take. And the only disappointing thing was, in whole scenario, he was my fantasy captain. But apart from that, that was perfectly legal. I mean, I was getting points, and I thought he's going to finish off the game for me. But anyways, keeping my fantasies aside, Afghanistan's 11, and then we have a few questions which Rohan has already answered. But Pritham, anything you can think, I want to ask him. Okay, जैसे हम लोग I would like to elaborate a bit on the third question, and because ये भी जवाब रोहन ने दे चुका है फिर भी, that what is a score, not the score, what is a score which you think Afghanistan should target? 300 तो छोड़ ही दीजिए, 300 is somewhere bonus, but above 200 कितना बनना चाहिए for them to be confident enough that they have their bowling to defend that kind To of be a total? competitive, Something kind of let's say to be competitive. competitive, yeah, correct. To be competitive, what is the minimum score you think Afghanistan should score in a 50-over game, bearing whatever surface they are playing? If I look at it from a surface that they're playing in Asia Cup, that's Lahore, I'll be looking at 260 to 70. If they get that, they'll be competitive definitely. If it's any other ones, little more than that is required in modern day cricket because of the pitches, the way they are, flat pitches, due, and how much the white ball doesn't do much after a certain point of time. They'll require more against the bigger teams. But looking at the group that they are in Asia Cup, 260, 270 is a minimum they should get in case they're batting first. Correct. And here I would want to add a point of yours, like you said about scoring more runs. Yesterday, I was looking into the match very closely, the first innings. 10 wicket Hath Pita, you had Hmm. 30 overs, 150 no loss. I think they slowed down quite a bit. Yeah. I think they should have accelerated and got 330, 340. 10 wicket आपके हाथ में है. You should have accelerated. You brought in Nabi himself in number 3. Hmm. That happens, but according to situation, 10 wicket हाथ में. Do you think Gulwaz slowed down just because he was nearing a century, or was it because they were confident enough to get 300 was their target in the management side in the back end? तो मेरे हिसाब से 330, 340 should have been from 30 overs में 150 no loss. भाई 10 विकेट आपके घर पे है, 20 ओवर है. जैसे मेरे हिसाब से सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन हियरिंग 30 ओवर में आप जितना रन करोगे उतना you should do in the Double, next double. second. Double you should do. So similarly, if 150 you have done in 30 overs, was it a target कि हम लोग 20 ओवर में 150 करेंगे? But you had 10 overs, 10 wicket, sorry, 10 wicket हाथ पे था. So you should have definitely targeted 180 to 190. आर्यन आपके हिसाब से were they 30-40 runs short? 30, Definitely. I 40, mean, I there feel were 50. 220 for no loss, I guess. कुछ ऐसा था ना जब Yeah, फर्स्ट विकेट गया. They should have got 320, something like 340 that. आराम से. Again, as you said, they slowed down. Maybe again inexperience जो है उनका बैटिंग में शायद दिमाग ने यूज किया ज्यादा. And credit to Pakistan also, they bowled some good ones once they got that bit of opening there. So credit to some of their bowling also. So it was a bit of both, but mainly उनका बैटिंग में focus and that power hitting towards the end is what they lack. ओपनिंग जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रहता है, समवन लाइक गुरबाज एक्सेट्रा कैन गो ओवर द टॉप, बट एक बार जब फील्ड खुल जाए, न्यू बैट्समैन कम्स इन, दे टेक दैट लिटिल मोर टाइम. जैसे रहमत शाह हो, दे आर नॉट दोस पावर काइंड ऑफ हिटर्स, मोर थोड़ा क्लासिकल टाइप के दिखते हैं. So that's where I think they've missed out those extra 20-30 runs, which was the factor in the end. Yeah, And I think one. not 30, not 40. I think 50. I think 50. Yeah, Pritham. Yeah, okay. And as we had just one question left, and this is one question we have been asking in every single preview. Anyone among you can answer this, or I would rather take individual answers for this. One standout batsman and one standout bowler you think will be crucial for Afghanistan. You cannot name Rashid Khan as the batter and the bowler, so it has to be two different players. So one standard batsman, one standard bowler. पहले रोहन फिर आते हैं आर्यन. Batsman, I'll go for Gurbaz. In form है, and because he's the top of the order, Asian conditions में opening batsman जो है उनको ball ज़्यादा batting की बात करते हैं ज़्यादा. So Gurbaz will be the one for me to watch out for. Bowling, I feel it can be someone like a Mujib. Aha, Balls in the you're taking power my play, answers. everybody will be looking to play out Rashid more carefully. Mujib can be the one who can sneak through and get those couple of key wickets,
especially Bangladesh against or Sri Lanka against. Mujib will be a very much a threat for them, is what I feel. So watch out for Mujib from my end. आई थिंक बैट्समैन तो अगर भाई साहब ये खिला ले तो मेरे लिए तो नजीबुल्ला जादरान है. He's played for, he was playing for the St. Lucia Kings. I mean, लपेट लपेट के he used to give smack king, और उसके बाद अलग अलग लीग्स में खेला है. बट बॉलर फॉर मी, हम इतना बात करते हैं अजी, फिंगर स्पिनर्स आर डन. Finger spinners are no more in the one day format. There is someone certainly called Mohammad Nabi, और we've talked about so much, अश्विन नहीं है उनके पास है जो लेफ्ट हैंडर्स को निकाल सकता है. पाकिस्तान के पास there was a certain Mohammad Hafiz. These guys still have a off spinner, and being an off spinner myself, I'm really proud of the fact that at least he's there. So Mohammad Nabi for me very very key, और he uses the angles. अगर आप उसका ध्यान से बैठ Arm के ball. 5 ओवर का स्पेल भी देखोगे, एक दो बॉल सीधा डालेगा, चौथी बॉल पे वाइड ऑफ द क्रीज आएगा. सो ही इज अ क्राफ्टी पर्सन. पेस सो ही इज वेरिएशन भी वेरी अच्छा है, इंपॉर्टेंट फॉर. एक बार थोड़ा फास्ट में यस, डालता है. exactly. So he'll So, be my go to man, and I feel very sympathized for him कि बेचारे को IPL में इतना गेम्स नहीं मिला जितना he maybe he deserved. But आरसीबी में भेज yeah, दो यार, that हमको भी was, एक ऑफ स्पिनर चाहिए. yeah, actually so, so, transport someone to India. सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि these bowlers who bowl really well या arm ball ये लोग का बहुत अच्छा लगता है. Just like I was a really good fan of शाहबाज नदीम. बहुत अच्छा आर्म बॉल डालता था. इमाद Yeah, वसीम he पाकिस्तान के. Imad Wasim, hmm. really good arm ball bowler. Similarly, Mohammad Nabi, they bowl really well arm ball. And this speciality of, like you said, bowling wide of the crease, coming closer to the stumps, angles, then pace variation, like Rohan said. This not just has a skills but also experience matters. या इतना गेम खेला है कि Yeah, experience आपके under the belt है, so you know exactly when to do that, when to do this. So Nabi, another player, up out of the box bowler. We were all focusing on Rashid, we were all focusing on Noor Ahmed, Mujib. Nabi, another player that can definitely win your game with the bat, win your game with the ball. So yes, really, I really like that pick, Ferrari. And over to you to conclude the session. yeah, it's been a great session, and thank you to Rohan. But as always, he gave all the thing I like about this guy, and also I'm like, यार ये सारे जवाब पहले ही दे देता हूँ, तो इस बंदे को मैं पूछूं क्या? तो That is the biggest conundrum सॉरी यार. as a host. When we are hosting Rohan, that is the biggest thing. But Afghanistan, again, to summarize this team for me, potential into progress. If I have to make an autobiography on this team, I'll keep this title, and this title suits this team. I like how they are shaped up, and we as Indians, as neutral fans, we wish them the best in the Asia Cup. Just play a bit okay against India and then go all guns blazing against other teams. That's what we know. But the fans, you have your say. Let us know what you think about Afghanistan, how far they're going to go, what is their 11, and was the Mankad right in your eyes or no? That happened yesterday. We've रन done आउट with बोल our यार, मकड़ fourth मत team. बोल. Oh, sorry, run out, run out. What was I even thinking? Run out, and we're done with the fourth team. We are left with the Nepal and Sri Lanka. Nepal has announced their team, but Sri Lanka are facing some issues. Their ace spinner Manindu is out, and I think it will be a last moment announcement for Sri Lanka in this Asia Cup, and we'll be back with those. Until then, hit that subscribe button with anything your mouse, or if you have a touch screen on, that is the best, and press that bell icon as well. So yeah, we'll see you with the other two teams. Thank you for viewing, and we'll see you with the other two teams, and we'll be back with the previews and the reviews as the Asia Cup commences in 5 days. Thank you, and have a good day. Thank you so much.